Someone is saying that are 14, 16 hours compulsory for cracking this exam? I would say definitely not. It's not humanly possible to devote so much time on an everyday basis. It will make you feel burnt out अगर आप रोज इतनी पढ़ाई करेंगे. आई विल शेयर माई ओन एक्सपीरियंस. मैं 8 से 10 घंटे तो पढ़ती थी on a daily basis. That worked for me. 10 के बियॉन्ड हो सकता है कभी एग्जाम के आसपास आई वुड स्टडी, बट 9 hours 10 hours वॉज एन एवरेज डेली स्टडी रूटीन. तो 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू दैट इन लेसर टाइम एज वेल. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी इम्पोर्टेंट है? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आंसर्स का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फ्लो ही डिसाइड करेगा कि आपको मेंस में कितने मार्क्स मिलेंगे और मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं. और इसमें स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंस में, क्योंकि बहुत ही लेंथी होता है पेपर जो हमें 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है. तो आपको लिखना पड़ेगा टू सी इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दैट पेपर, टू सी इफ योर आंसर्स आर मेकिंग सेंस, if the content is at a good level, if you'll get marks. So answer writing is really important. I think it's the crux of the mains preparation. Content तो बनाना ही है, इसके साथ साथ you have to write and see that if your answers are not good enough.